हेलो वेलकम टू हुस्न जर्नी। और आज है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, 5+5+10। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज हाईली इंटरैक्टिव फेस टू फेस promotional method where seller or sales representative attempts to pursue, educate, and assist prospective buyers to purchase a company products or services. Unlike empirical marketing tools such as advertising or billboards, personal selling builds a dynamic two-way communication link. It is individualized approach designed to map specific product benefits to the distinct needs of customer and making a critical element of promotional mix, particularly for high-value, complex or natural प्रोडक्ट्स। इसके बाद इसका नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग, टू वे कम्युनिकेशन फ्लो होता है, डिटेल खुद से बना करके लिख सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंटरैक्टिव डिस्कवरी प्रोसेस। इन सब का एक एक लाइन बना करके खुद से लिखा जा सकता है। एंड देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, जो उसका पार्ट 2 होता है क्वेश्चन का। पर्सनल contact, direct personal contact. It involves human to human, physical or real time digital interaction and creating psychological obligation on the prospect to attend to the sales presentation. And then immediate feedback loop. Salespeople can read non-verbal cue, facial expression and body language, allowing them to counter objection before they harden into rejection. Customization of message. Unlike generic television commercial broadcasted to millions, personal selling permits to tailored farming of technical details specifically for the target territory, high conversion efficiency and cost structure. And then आता है क्वेश्चन नंबर 2, discuss various types of salesmanship and state its significance. Explain briefly the process of creative salesmanship. इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में इसका कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप एंड उसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप में आता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेल्समैनशिप, जो फोकस करता है सेलिंग रॉ मटेरियल, हैवी मशीनरी एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। इट इन्वॉल्व्स हाई टेक्निकल कॉम्पिटेंस। एंड देन आता है मर्चेंट होलसेल सेल्समैनशिप। इसमें होता है इंटरैक्ट विद रिटेल बिजनेस इंटरमीडियरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर टू स्टॉक चैनल्स। एंड देन आता है रिटेल सेल्समैनशिप, occurs directly within brick and mortar stores where sales personnel assist incoming retail consumers with ready inventory, requires patience, courtesy and product location knowledge. And then specialty salesman, इसमें होता है selling high ticket luxury goods, consumer durable or specialized service. And then significance of salesmanship. Salesmanship significance में आता है commercial growth for manufacturer. It clearly builds up inventory and helps to economies of scale for the consumer. It serves an educational function by identifying hidden problems. And then इसके process of creative salesmanship अगर देखेंगे तो इसमें आ जाता है आपका 6 पॉइंट। 6 पॉइंट से बहुत बेसिक्स एंड ईजी है लाइक प्रिपेयरिंग एंड प्री अप्रोच। प्रिपेयरिंग एंड प्री अप्रोच में आता है क्लाइंट्स, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल कैपेसिटीज। इसमें एग्जांपल से लिखना पड़ता है। सिक्योरिंग अटेंशन, हाउ वी सीक अटेंशन by diagnostic question, value proportion hook. We can write these examples and by ourselves. And then next आता है arousing interest, connecting product attributes directly to the buyer's operational environment and then creating desires using live demonstration, visuals, evidence, case studies, and then handling objections systematically, isolation resistance points and turning objection into valid logical bridges for closing the sale, employing appropriate closing methods to secure an official order commitment. And then question number 3 की ओर बढ़ते हैं। Describe with the help of suitable example various factors affecting buyer behavior. हम लोगों को फैक्टर्स बताना है जो कि बायर का बिहेवियर अफेक्ट करता है। हाउ बायर बिहेवियर अफेक्ट फैक्टर्स, सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एक्टिव इंटरनल नीड from Maslow's hierarchy. A buyer motivated by security will look for extensive product varieties and heavy build material. Perception of how individual selects, organizes and intercepts incoming markets stimuli. One consumer might perceive a high price point, defensive guarantee or premium quality. Another views it is to corporate exploitation and learning and attitude. And then next बढ़ते हैं social factor. Social factor भी बहुत important होता है like reference group, direct peer circles, professional bodies or aspirational celebrity figures whose visible consumption habits at individual actively tries to emulate.
एंड देन फैमिली एंड रोल एंड स्टेटस में ऐसा हो जाता है कि विल बाई प्रोडक्ट्स सिंबलिकली अलाइन विद देयर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. And then culture factors. Culture factor is core culture, the fundamental values, belief system, and preference embedded within an individual from childhood by family and national environments. Then subculture. Subculture is distinct regional, religious, or ethnic divisions with large population that derive specific dietary and social class. Hierarchical society division lower, middle, upper class. And then personal factors. Personal factors include life cycle stage, professional occupation, personal economic circumstances, distinct lifestyle profiles, and core personality traits. एंड देन कॉम्प्रहेंसिव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. सबसे पहले परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एग्जाम्पल है, हम लोग खुद से दे सकते हैं. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर. इसके फर्स्ट पार्ट में एलाबोरेट द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. सबसे पहले सेल्स का मीनिंग एंड प्रेजेंटेशन बताना है, साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है, एंड उसके बाद करना है डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. तो सबसे पहले पार्ट ए में आ जाते हैं मीनिंग ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन. मीनिंग है सेल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन का. सेल्स रिप्रेजेंटेशन इज द कोर स्ट्रक्चर वर्बल एंड विजुअल narrative delivered by salesperson to explain how the product or services solves prospect operation problem or merits meets their specific needs. It forms the conceptual backbone of the pitching phase. And then next आ जाते हैं sales demonstration. Sales demonstration is on the hands of practical components within the presentation where the salesperson shows the product in actual physical operation. It shifts the discussion from the theoretical claims to empirical proof, validating speed, durability, texture, and software integrity. इसके बाद आ जाते हैं सेकंड में नंबर में स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. स्टेप्स में आता है सबसे पहले प्लानिंग, कस्टमाइजेशन, द ओपनिंग हुक, एंड देन आइडेंटिफाइंग कोर नीड, द कोर पिच, द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, एंगेजिंग द प्रोस्पेक्ट, ट्रायल, क्लोज एंड वेरिफिकेशन. एंड इसी के साथ साथ आ जाता है ये 7 पॉइंट्स में हो जाता है. 7 पॉइंट्स में हम लोग खुद से बना करके लिख सकते हैं. मेनली ये बोल्ड वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक प्लानिंग एंड कस्टमाइजेशन, द ओपनिंग हुक में ऐसा हो जाता है कि व्हाट फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ यूजिंग कंप्लाइंग, फिर आइडेंटिफाई कोर नीड, हम लोग कोर नीड फाइंड आउट करना पड़ता है. द कोर पिच, वी नीड टू फाइंड कोर पिच लाइक यूजिंग फैब मैट्रिक्स, फीचर्स, एडवांटेज, शोइंग एग्जैक्टली. एंड देन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इज हाउ टू शो, वी कैन शो द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन in data cast into software packages and engaging in prospect and trial closure and verification. लास्ट में ये वेरीफाई हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, explain the importance of sales reports and list the silent features of good sales report with example. Importance of sales reports. Sales reports are vital administration documents that summarize field sales performance, market intelligence, customer feedback, and territorial movement over a specific time frame. Their organizational importance, performance evaluation, strategic resources allocation, market intelligence gathering, financial forecasting. इसको थोड़ा सा elaborate करना पड़ता है. Like it enables managers to objectively review individual conversion ratio, volume targets, field activity rates against established KPIs. And strategic reliance allocation is highly geographical zones with product lines are generating high yields, efficient inventory and territory management. And marketing intelligence gathering is act as an early warning system regarding competitors, price adjustment, and financial forecasting is supplies reliable field pipeline data, use project quarterly cash flows and organized manufacturing schedules. And then आते हैं उसके पार्ट बी में selling features of goods sales report. What is selling features of goods sales report is it is clearly and of clarity and objectivity, freedom, ambiguous language, utilizing precise quantity metrics, and then relevance and conciseness, action oriented insight, accuracy and timeliness. Structure example monthly, quarterly. एग्जाम्पल्स मैंडेटरी नहीं है, बट अगर हम लोग दे सकते हैं तो बेस्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर डिस्क्राइब टेक्निकल एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इन सेलिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है. सबसे पहले की एथिकल इशूज इन सेलिंग होता है. डिसेप्टिव पॉपरी एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, मेक अनअप्रूवल, exaggerated claims regarding product capabilities, withholding material information, disagreement of competitor, commercial bribery. फिर की लीगल इश्यूज इन सेलिंग में आ जाता है breach of express and implied warranties, how we breach contract, and then price discrimination and collusion, reciprocal of buying negotiation and time sales contract. And then next question की ओर बढ़ते हैं. Discuss the sales closing technique, citing suitable example. Sales closing technique assumption close. The salesperson behave as if client has already made a positive decision, smoothly transition into logistic delivery as an alternative choice of close. Fully rather secure our scenario. Example सब कुछ बना करके लिख सकते हैं. The urgent standing room only, SRO close, the summary benefits close, and the trial close. सारे तरह से close होता है. जैसे इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, राइट एंड होता है. इसमें हम लोगों को लिखना पड़ता है लाइक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ऑफ सेल्समैन,
सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्किल ऑफ सेल्समैन, इसमें टाइम मैनेजमेंट, टेरिटरी मैनेजमेंट, रूटिंग, सीआरएम एंड डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन, पाइपलाइन मैनेजमेंट, एंड देन मैस्कोट थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की इन सेलिंग कर दी है। तो साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, सोशल बिलोंगिंग नीड, एस्किन स्टैट्यूट नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आते हैं सीरीज नंबर 2 में। क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से सेल्स पीपल work in variety of selling situation in the light of statement describe various types of selling situation with suitable example. तो सबसे पहला है inside selling and outside selling. Inside selling the sales professional work from centralized office location using digital communication tools, phone system and virtual demos. And outside selling is the sales representative travel directly to the respect of location of production facility. And then business to consumer selling. Business to consumer means how we sell product from business to consumer and user consumer goods. And this cycle is represent driven emotion, immediate personal needs, peer trends, and then business to business is B2B. That is formal organizational buying committee, strict procurement. Similarly, corporate is another example, and then miscellaneous selling. Miscellaneous selling is the sales represent does not seek a direct order. Instead, they focus on educating key market influences, building goodwill, and driving indirect demand for the product. And then team selling. Team selling is used for complex multi-million dollar engineering or IT enterprises contract. A single sales representative is supported for cross-function of technical experts. And then आता है narrative और importance of sales management. Explain the scope of sales management. Narrative and importance of sales management में आता है सबसे पहले revenue generation sustainability. How revenue is generated, convert marketing strategy into tangible asset revenue and providing necessary. And customer relationship management, how our customer relationship is driven. Optimal resources deployment, prevent costly territory overlap and ensures high potential business. And then cross-functionality collaboration delivers invaluable real-time feeds insight back to the product R&D. And then scope of sales management, formulating sales policies and strategies, sales force planning and designing, talent management, directing and motivating sales performance evaluation. And then question number 3, explain various sources of recruitment of sales force in organization. And then discuss the selection process of sales force in an organization. Sources of sales force recruitment, सबसे पहला आता है internal transfer promotion and then employee referral program. Internal transfer promotion में होता है moving technical customer services or production personnel into sales force. This candidate possess deep internal product knowledge. And then employee referral program leveraging the professional network of current employees which often yield high quality cultured aligned candidate. External recruitment sources is the job portals and digital media utilizing platform like LinkedIn, Indeed or specialized job boards to source active job seekers. Campus recruitment is visiting business schools and undergraduate universities to recruit, and then employee agencies and competitive coaching. ये external recruitment source है, ये internal recruitment sources है. And then आता है इसका पार्ट बी में सेल्स प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस. सबसे पहला सेल्स पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन. स्क्रीनिंग हो जाता है एप्लीकेशन का, एंड देन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है. फिजिकल इंटरव्यू होता है या फिर चलते हैं ऑनलाइन आज के मोड में होता है इंटरव्यू. साइकोलॉजिकल एंड एप्टीट्यूड, ऑन दैट वी टेस्ट साइकोलॉजिकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. ये कंपनी की तरफ से रोल पे इवैल्यूएशन, एंड देन वी गिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉर रोल पे इवैल्यूएशन, एंड देन कंप्रेहेंसिव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. आफ्टर दैट कंप्रेहेंसिव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, कैरेक्टर, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, रेफरेंस सारे चीज चेक हो जाता है, एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ ऑफर. जैसे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है लेटर टू ऑफर मिल जाता है. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर विद सुटेबल एग्जांपल. बायर एंड कंज्यूमर का सबसे पहले हम लोगों को देना है एग्जांपल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बायर बिहेवियर. फिर उसके बाद बायर का बिहेवियर क्यों हम लोगों को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बायर कौन होता है? बायर एक इंडिविजुअल होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी दैट एग्जीक्यूट्स द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, pays for the item and sign for purchase agreement. And then a consumer is an end user who actually consumes, operates or utilize the product. And then buyer consumer प्राइमरी फोकस होता है ट्रांजेक्शन, प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट, पेमेंट, टर्म्स एंड वेंडर रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट यूटिलिटी, डेली कंफर्ट, परफॉर्मेंस. एंड इसका इंडस्ट्रियल कॉस्ट होता है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइन का कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री ऑपरेशन, रनिंग मशीन, डेली अपेरेंट परचेजिंग का फॉर्मेट करता है, द इम्प्लांट हु कंज्यूम्स द फॉर्मूला. इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर, इसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इनेबल पिच कस्टमाइजेशन करता है, इम्प्रूव ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट होता है, रिड्यूस सेल्स साइकिल टाइम होता है, डिराइव्स प्रोडक्ट इनोवेशन होता है. एंड देन आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे से आ जाता है डिस्कस वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय कंपनी टू मोटिवेट इट्स सेल्स पर्सन. आपको मैं एक बार बता देना चाहूँगा ये ओवरऑल सारे तरह का क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है और इसको 4 से 5 सीरीज में पार्ट बांटा गया है. ये सीरीज 2 चल रहा है, इसके बाद और 3 से 4 सीरीज और है इसी क्वेश्चन में. लाइक सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय द कंपनी टू मोटिवेट इट्स सेल्स पर्सन. फाइनेंशियल मोटिवेशनल टेक्निक्स. फाइनेंशियल मोटिवेशनल टेक्निक्स प्रोग्रेसिव
commission structure linking to income directly of sales performance progressive model increase in the commission percentage of one salesperson exceeds 100% of the monthly quota. Performance bonus is lump sum financial reward given to achieve specific strategic milestone, and then sales contests a short-term highly energy competition that rewards top performance. And then non-financial motivation is public recognition and award, career advancement opportunity मिल जाता है, सेल्स मीटिंग इन पर्सनल मेंटरशिप, एडवांस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो जाता है। ये हम लोग नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल टेक्निक मिल गया, और ऊपर का फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक इजी है, बहुत इजी, आराम से बनाकर देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट कैटेगरीज एंड respective strategies to deal with them, and discuss various presentation strategies. Analytical prospect highly detail oriented होता है, the embedded relationship driven prospect, the assertive expressive prospect, then sales presentation stimulates responsive energy, then the formula presentation, the need satisfactory strategy। इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ये सारे सीरीज 3 सीरीज 4 का ये पूरा क्वेश्चन है पूरा बना हुआ, एंड ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पूरी तरह डिजाइन किया गया है। एंड ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 40 to 50 पेजेस का पूरा पीडीएफ है। आप चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ओनली 49 रुपीज में आप ये परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप करें इस नंबर पर, और इसके बाद कल एग्जाम से आने के बाद आप खुद देखेंगे एग्जाम में कि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। और इसके साथ साथ एडिशनल में एक और पीडीएफ दे दूंगा, वो होगा 20 पेजेस का, यानी कि टोटल हो गया आपको अगर देखा जाए तो शीट के अकॉर्डिंग टोटल ओवरऑल 30 to 40 शीट्स का आपका एक पीडीएफ ये दोनों हो जाएगा। 2 पीडीएफ मिल जाएगा आपको 49 रुपीज में। इसके साथ साथ आपका सारा चीज कवर्ड रहेगा, एंड आप ये आराम से पढ़ करके खुद से समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद कल एग्जाम में बहुत ही बेटर मिनिमम आप 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो यहाँ तक आ गए हैं प्लीज 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।